Okay, sir. Okay. Ulka Mayur, director, Mayur Puri, producer, Manan Shah. Manan Shah, producer, pardon me. We have a crew member, Yugandhar Deshmukh. And of course, hosting them on the red carpet, we have General Manager of Production and Distribution, NFTC, Mr. Tarun Taneja, everybody. And I have a few questions for the director, of course, Ulka Mayur. Sir, what inspired you to explore this emotional journey of returning home and the delicate connection between root and ritual? Just one little conversation, like it happens. You know, one little conversation leads us to great stories. So there was this casual conversation about someone telling me that the guy who features in this film, that I'm going to go to my hometown, my village, to celebrate Ganpati festival. And as I talked more, I realized that he goes once a year. So I suddenly realized this parallel, you know, of humans traveling and Ganpati coming. So this parallel was very interesting to me. And then as I thought more about it, I realized that how we are all migrants. Like we are all we have left our villages, our hometowns, and we have moved to another cities. And I wanted to explore that thing as well. And then that beautiful land of food. So that was another very cinematic experience. So I think this all the thoughts together led us to make this documentary. That's beautiful. And what do you hope that audiences will feel as they witness the stories of belonging, migration, and the fading ties to one? What we have actually experienced, I'm sure audience will experience the same. It's a very immersive story. So once you are in it, like when it gets over, a lot of people were said, "Oh, we were in a root shop, then the film is over. We are thrown out of the village." You know, you all feel that you are there, and not only that. I'm sorry if it reminds you of your hometowns and your villages, because it's meant to do that. It will. You will have that yearning that मैं कब जल्दी घर वापस जाऊँ अपने गाँव अपने छोटे से शहर. Oh, thank you. That's beautiful. And how's the feeling being here if you go out? It is a homecoming for me to come to Goa because it is my second home. I work here. We have a non-profit organization here working for personal development. And coming to IFFI is always like a homecoming because filmmaking is our passion. We come here to celebrate art, we come here to celebrate filmmakers, filmmaking, and it is an absolute honor to be here. And this time as a producer myself, and it being my maiden documentary as a producer, it is all the more like an honor for me to be here. That's lovely. Would anyone like to add to that? The feeling? No, it's great. I just hope that everybody sees this documentary. It's a beautiful piece of work, like Ulka said. And in modern world, we are all immigrants actually. हम लोग सब लोग थोड़े कहीं ना कहीं से आए हैं दूसरे शहर में, बस we are all doing that, right? So कहीं ना कहीं, like Ulka said, you will want to go back to your village and give up to your parents and eat your own food after watching this. That's all we want. We just want everybody to connect back to their roots. That's it. Oh, that's a beautiful message. Thank you so much, and I would like to request you all to post for a group photo. आगे देखिए. Center. Thank you. Once over to the media for a few questions. मराठी युगा तो बोले. Sir, film is Marathi, but the title name is English. What was the reason? बिकॉज इंग्लिश में एक कहावत है, होम इज वेयर द हार्ट इज. अगर फिल्म का नाम सिर्फ होम रखते तो इतना इंट्रीगिंग नहीं है, लेकिन होम इज वेयर द हार्ट इज. तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट होम, दे आर कॉलिंग इट वेयर द हार्ट इज. तो जवाब आपके पास में. तो सवाल है जो टाइटल है, बट जवाब ऑलरेडी आपको पता है. So, what do you like to say about transformation of rural homes? Transformation of rural homes is important, and because as the technology and as the civilization and urban development happens, that is important. But as we went to the village and we saw in the documentary, the old homes, the way they were made, the way they have high ceilings, गर्मी नहीं लगता है उधर, एयर का मूवमेंट अच्छा है, अर्दी मटेरियल जो द लोकल मटेरियल है उसको लेके बनाया हुआ है. वी थिंक दैट
olden times also it was fine only, so we should modernize, but जो old soul या old उसकी जो खूबियाँ हैं वो नहीं छोड़ना चाहिए, वो भी रखना चाहिए. Sir, while making this film, any of your favorite memories which you like to share with us today? Yeah, she was just saying there it was very funny that there used to be this one, there was because गांव में रहने की जगह नहीं है, so everybody was staying a little away from the village, the unit, and then they used to come every day to shoot there in the morning, और शाम को वापस जाते थे क्योंकि होटल ही 20 किलोमीटर दूर है, नज़दीक में there was nothing. वो अकेला गांव है, लास्ट गांव है वो, उसके बाद फॉरेस्ट शुरू हो जाते हैं, सोनारवाड़ी. तो वो गांव जाने के लिए रास्ते में देयर इज वन ब्रिज दैट यू हैव टू क्रॉस, दैट ब्रिज इज हॉन्टेड. वो पूरा डॉक्यूमेंट्री शूट हो गया, तब तक गाँव वालों ने हमको बताया नहीं कि वो ब्रिज हॉन्टेड है. लास्ट दिन बताया कि एक्चुअली हॉन्टेड है, तो हम लोगों ने बोला पहले क्यों नहीं बताया, तो बोला अगर पहले बताते तो आप लोग डर जाते और आते ही नहीं शूट करने के लिए. सर, ऐसी कुछ मिस्टेक्स चीज हुई वहाँ पे शूटिंग के टाइम? एवरीथिंग कंफर्टेबल, देयर इज नो प्रॉब्लम. हम लोगों ने उन्हीं का खाना खाया जो गांव के लोग घर पे जो बनाते थे, वो बहुत ही स्वीट, बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे लोग हैं. गराटे फैमिली जिनके घर में हमने शूट किया, उमेश गराटे जो प्रोटैगनिस्ट है फिल्म के, जो ट्रेनर हैं, जो हमको लेके गए वहाँ पे, उनकी फैमिली ने हमको होस्ट किया था और इट वाज अ वेरी कंफर्टेबल शूटिंग एक्सपीरियंस. गांव में जितना कंफर्टेबल, आप सोचिए इतना छोटा गांव है कि देयर इज ओनली 9 होम्स. अब वो इतना छोटा गांव में जो कंफर्टेबल हो सकता है वो उन लोगों ने कंफर्टेबल किया, बट इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. सर, आप ऑलरेडी 2 इंटरनेशनल फेस्टिवल जाके आए हैं, अभी गोवा में आए हो. गोवा के बारे में क्या कहना चाहोगे सर? गोवा मेरे लिए तो पर्सनली मेरा सेकंड होम है. मैंने यहाँ पे बहुत मेन स्ट्रीम काम किया है. धूम पिक्चर हम लोगों ने यहाँ शूट की थी, मैं एसोसिएट डायरेक्टर था उसका. फिर मैंने टेल मी ओ खुदा भी यहाँ पे बहुत शूट की थी. उसके अलावा भी मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, तो गोवा यूनिवर्सिटी के साथ में मैंने वर्कशॉप भी किए हैं, यहाँ पे पढ़ाया भी है, बच्चों को फिल्म मेकिंग सिखाया भी है. तो मैं तो बहाने ढूंढता हूँ गोवा आने के. सेरेंडिपिटी फेस्टिवल में हम लोग IPRS की तरफ से स्टेज करते हैं, तो उसके लिए भी मैं आता हूँ. इस साल मैं गोवा सेरेंडिपिटी फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाला हूँ. तो गोवा तो घर है, गोवा मेरे लिए सेकंड होम है. एंड इफी ऑफ कोर्स इज अ most important festival in India because it is the biggest also, and all the range of films that you get to see in IFFI, I don't think any other festival has this big range of films and such range of people who come. Mainstream भी हैं, non mainstream भी हैं, feature भी है, non feature भी है, Indian भी है, foreign भी है. आप जितने boxes बोलोगे IFFI सारे boxes tick करते हैं. थैंक यू सर. Thank you.